Hello, good morning, students. So, we were reading the poem Christabel that is written by Samuel Taylor Coleridge, and now we will continue the poem. Okay, so again the wildflower wine she drank, her fair large eyes again glitter bright, and from the floor whereon she sank, the lofty lady stood upright. She was most beautiful to see, like a lady of a far country. ठीक है, तो जो हमने लास्ट स्टेंजा छोड़ा था, जहाँ पर पोएम को हमने छोड़ा था कल, उसमें हमने पढ़ा था कि क्रिस्टाबेल नेल्ट बाई हर बाई द साइड ऑफ जिरेल्डाइन and looking heavenward with her blue eyes and said, I am sorry, dear lady, uh, this miserable ride you have had has shocked you a little too much. So Geraldine wiped the drops of perspiration from her brow and in a feeble voice said, it is over now. Okay, and now she drank the wine made of wild flowers that was made by her mother, and her big beautiful eyes began to shine brightly. ठीक है, तो वो वाइन जो कि क्रिस्टाबेल ने उसको पीने के लिए दी थी, दैट इज़ मेड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स. ठीक है, वाइल्ड फ्लावर से बनी हुई थी और जो कि क्रिस्टाबेल की मदर ने बनाई थी. तो उस वाइन को जेरेल्डाइन फिर से पीती है, and now her big beautiful eyes began to shine brightly. Okay, and she had earlier collapsed on the floor but now she stood upright. ठीक है, जब लास्ट टाइम क्रिस्टाबेल के चैम्बर में वो एंटर करती है तो शी कॉलेप्स्ड ऑन द फ्लोर बट नाउ शी स्टूड अपराइट and she was most beautiful to look at, and she was like a lady belonging to some distant land. Now she is looking the most beautiful lady, who Geraldine. Okay, and thus the lofty lady spake. And thus the lofty lady spake, all they who live in the upper sky do love you, holy Christabel, and you love them, and for their sake, and for the good which me befell, even I in my degree will try, fair maiden, to requite you well, but now unrobe yourself, for I must pray before yet in bed I lie. So now Geraldine said, this is what the grand lady said, and thus the lofty lady spake. Lofty lady जो वर्ड यूज़ हुआ है वो जिरेल्डाइन के लिए यूज़ हुआ है. जिरेल्डाइन कहती है कि ऑल दे हु लिव इन दी अपर स्काई, सो ऑल दी एंजेलिक स्पिरिट्स लिविंग इन हेवन लव यू एंड यू लव दैम. ओके, एंड फॉर देयर सेक, for these angelic spirits' sake, and for the sake of the good fortune that befell me, I would try my best to do some good to you. And so now you should undress yourself. As for me, I must pray before I retire. तो जिरेल्डाइन जो है वो क्रिस्टाबेल से कहते हैं कि now undress yourself because I want to before I go to sleep. Okay, before I retire. Quoth Christabel, so let it be. And as the lady bade, did she her gentle limbs did she undress, and lay down in her loveliness. So now Christabel agreed. Quoth here means agreed. Agreed Christabel, so let it be. And in accordance with Geraldine's instructions, she undressed herself and lay down in her bed, displaying all her loveliness. ओके, मीन्स क्रिस्टाबेल जो है वो जिरेल्डाइन की बात मान लेती है एंड शी अनड्रेस्ड हर सेल्फ. ओके, एंड ले डाउन इन हर बेड डिस्प्लेइंग ऑल हर लवलीनेस टू that fair lady Geraldine. But through her brain of weal and woe,
So many thoughts moved to and fro, that when it were her lids to close, so halfway from the bed she rose, and on her elbow did recline to look at the Lady Geraldine. But so many good and evil thoughts uh, passed through Christabel's mind, and that she found it difficult to close her eyes. ठीक है, क्रिस्टाबेल जो है उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और उनकी वजह से शी इज़ अनेबल टू क्लोज हर आइज़. ठीक है. So halfway from the bed she rose, and on her elbow did recline to look at the Lady Geraldine. So she partially rose from her bed, reclined on her elbow, and looked at Geraldine because she is unable to sleep. Beneath the lamp the lady bowed and slowly rolled her eyes around, then drawing in her breath aloud, like one that shuddered, she unbound the cincture from beneath her breast. Her silken robe and inner vest dropped to her feet, and full in view, behold her bosom and half her side, a sight to dream of, not to tell. O shield her, shield sweet Christabel. तो अब जब क्रिस्टाबेल जेरेल्डाइन को देखती है, ठीक है, तो वो क्या देखती है? Beneath the lamp the lady bowed, kneeling under the lamp, Geraldine slowly rolled her eyes around. Beneath the lamp the lady जो वर्ड यूज़ हुआ है that is used for Geraldine. So beneath the lamp the lady bowed and slowly rolled her eyes around. Then she noisily drew her breath in like a person who was trembling with fear. Then drawing in her breath aloud like one that shuddered, who is shivering, who is trembling with fear. ठीक है. She untied her belt from under her breast. Geraldine untied her belt from under the breast. ठीक है. सिंचर जो वर्ड है यहाँ पर वो उसका मतलब होता है बेल्ट. ठीक है. तो द बेल्ट फ्रॉम बीनीथ हर ब्रेस्ट. ठीक है. हर सिल्कन ड्रेस एंड her inner wear slipped down to her feet, exposing to full view her bosom and half her side. Means her silken robe means dress. So her silken dress and inner vest dropped to her feet and full in view. Okay. The sight presented by her bosom could be better imagined than described. इस समय क्रिस्टाबेल जो जेरेल्डाइन की साइट देख रही है, who is now completely naked. So it is the scene that can be only imagined, it can't be described. ठीक है. The sight presented by her bosom could be better imagined than described, it can't be described. A sight to dream of, not to tell. A sight to be imagined of, not to tell. O shield her, shield Christabel. May sweet Christabel be well guarded from any harm that might come to her. ठीक है. तो क्रिस्टाबेल जो भी इस समय जेरेल्डाइन की साइड देखती है, हु इज़ कम्प्लीटली नेकेड, तो एक तरह से प्रे करते हैं हम कि जो वर्जिन मैरी है, जो भी गार्जियन स्पिरिट्स हैं, वो रेस्क्यू करे, बचाएं किसको? क्रिस्टाबेल को. ठीक है. Yet Geraldine nor speaks nor stirs. Ah, what a stricken look was hers. Deep from within she seems halfway to lift some weight with sick essay, and eyes the mad and seeks delay. Then suddenly, as one defied, collects herself in scorn and pride, and lay down by the maiden's side, and in her arms the maid she took, ah, well a day. And with low voice and doleful look, these words did say, in the touch of this bosom there walk the spell, which is Lord of thy utterance. Christabel, thou knowest tonight and wilt know tomorrow. Will know tomorrow this mark of my shame, this seal of my sorrow. But vainly thou worest,
For this is alone in thy power to declare that in the dim forest thou heardest a low mourning, and foundest a bright lady surpassingly fair, and didst bring her home with thee in love and in charity, to shield her and shelter her from the damp air. ठीक है, तो अब Yet Zeraldine nor speaks nor stirs. Zeraldine neither speaks nor moves, though there is a look of misery in her eyes. ठीक है, तो Zeraldine ना तो मूव करती है ना ही कुछ कहती है, लेकिन फिर भी हम उसकी आंखों में एक मिजरी देख सकते हैं. ठीक है, एक पिटी देख सकते हैं. अ लुक ऑफ मिजरी, अ लुक ऑफ पिटी. Yet Zeraldine nor speaks nor stirs. Ah, what a stricken look was hers. ठीक है. Deep from within she seems halfway to lift some weight with sick essay. ऐसा लग रहा है. It appears as if she were making a desperate effort to remove some heavy burden from her mind. ठीक है, तो deep from within she seems halfway to lift some weight with sick essay. ठीक है, essay means attempt, effort. And eyes the mad and seeks delay. Then suddenly, as one defied, collects herself in scorn and pride. And then suddenly she looks at Christabel and seems to be hesitant. Then suddenly, like one who had been defied, she collected herself with pride and contempt and lay down by the side of Christabel. ठीक है, लेकिन अचानक से Zeraldine खड़ी हो जाती है. ठीक है, suddenly like one who has been defied, she collected herself with pride. Now Zeraldine collected herself with pride and contempt एंड ले डाउन बाय द मैडन्स साइड, और Zeraldine की साइड में लेट जाती है. एंड इन हर आर्म्स द मैड शी टुक, और Christabel को वो अपनी आर्म्स में ले लेती है. अह वेल अ डे, एंड विथ लो वॉइस एंड डॉलफुल लुक. डॉलफुल मीन्स सैड. ठीक है, एंड she took Christabel within the fold of her arms, and alas, with a low voice and sad look she uttered the following words. ठीक है, तो एक लो वॉइस के साथ में एंड विद अ डॉलफुल लुक, विद अ सैड लुक, दीज वर्ड्स डिड से. ठीक है, Zeraldine ये वर्ड्स कहती है. क्या कहती है? इन द टच ऑफ दिस बूजम, in the touch of this bosom there walked a spell. Means this touch of my bosom is exercising a spell on you, which is lord of thy utterance, Christabel. Means this touch of my bosom is exercising a spell on you, and it will fully control your speech. मीन्स Zeraldine कह रही है Christabel से कि ये जो मैंने तुम्हें अपनी आर्म्स में जो लिया है, मैंने जो तुम्हें टच किया है, अपनी बूज़म को जो टच किया है तुमने, तो इससे तुम्हारे ऊपर एक स्पेल होगा, एक मैजिक होगा. ठीक है, और उसके बाद में यू विल बी नॉट एबल टू स्पीक, इट विल कंट्रोल योर स्पीच. ठीक है, तो इस तरह से मैं जो तुम्हारी स्पीच है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊँगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक. Thou knowest tonight and will know tomorrow. ठीक है, मीन्स तुम्हें पता होगा, तुम्हें अभी भी पता है, एंड विल नो टुमारो, और तुम्हें कल भी पता होगा. दिस मार्क ऑफ माई शेम, दिस सील ऑफ माई सोरो. ठीक है, मीन्स दिस मार्क ऑफ माई शेम एंड माई सोरो दैट आई स्टाम्प ऑन यू नाउ विल बी नोन टू यू टुनाइट एंड टुमारो. तो ये जो भी अब हो रहा है उसके बारे में तुम्हें अभी भी पता है और तुम्हें कल भी पता होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब इट टू एनीवन. ठीक है, तुम ये किसी को भी नहीं कह पाओगी, बिकॉज इट विल कंट्रोल योर स्पीच. द मैजिक द स्पेल, it will control your speech, so you will not be able to describe the event. Okay, this seal of my sorrow, but vainly thou warest, for this is alone in thy power to declare that in the dim forest thou heardest a low mourning. तुम सिर्फ इतना बता पाओगे, तुम्हारे पावर में सिर्फ ये डिक्लेयर करना होगा कि इन द डिम फॉरेस्ट दाउ हर्डेस्ट लो मॉर्निंग, कि एक डिम फॉरेस्ट में तुमने एक लो मॉर्निंग की आवाज़ सुनी थी. एंड फाउंडेस्ट अ ब्राइट लेडी, और तुम्हें वहाँ पर एक ब्राइट लेडी मिली थी, सरपासिंगली फेयर, हु वॉज एक्सीडिंगली ब्यूटिफुल, एंड डिडेस्ट ब्रिंग हर होम विद दी इन लव एंड इन चैरिटी, और बिकॉज ऑफ लव एंड चैरिटी यू ब्रिंग दैट लेडी
at your home to shield her, to protect her and shelter her from the damp air. ठीक है, तो तुम्हें एक डिम फॉरेस्ट में एक लेडी मिली थी दैट वाज एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल, और तुम उसे अपने घर लेकर आई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लव एंड चैरिटी एंड टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द डैम्प एयर। ठीक, उसको रेस्क्यू करने के लिए तुम उसे अपने घर लेके आई थी। तो तुम सिर्फ इतना ही बता पाओगी, इसके अलावा अभी जो नाइट है इसके बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बता पाओगी। किसकी वजह से? ये जो मैजिक होगा, कौन सा मैजिक? जो ज़ेरेल्डाइन इस समय क्रिस्टाबेल को जो उसने अपने बूज़म में जो ले रखा है, ठीक है, अपनी आर्म्स में जो ले रखा है, तो उसके बाद में क्रिस्टाबेल के ऊपर ऐसा स्पेल होगा, ऐसा मैजिक होगा, जादू होगा, जिसकी वजह से वो कुछ भी बता पाने में अनेबल होगी, वो कुछ भी नहीं बता पाएगी। ठीक है, एंड योर रेसिस्टेंस इज़ फ्यूटाइल। अगर अभी कुछ भी विरोध करती हो, रेसिस्ट करती हो, दैट इज़ फ्यूटाइल, वो व्यर्थ है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। यू विल हैव पावर ओनली टू से दैट इन द डिमली लिट फॉरेस्ट यू हर्ड अ लो मॉर्निंग साउंड, that you discovered an exceedingly beautiful lady and that you brought her home out of sympathy in order to shelter her from the damp air। ठीक है, तो तुम सिर्फ इतना कर पाओगी, इतना बता पाओगी कि तुमने डिम फॉरेस्ट में यू हर्ड अ लो मॉर्निंग साउंड, तुम्हें एक लो मॉर्निंग साउंड सुनाई दिया था, एंड देन यू डिस्कवर्ड एन एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल लेडी, और तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सुंदर लेडी मिलती है, एंड यू ब्रॉट हर होम आउट ऑफ सिंपैथी, और सिंपैथी की वजह से तुम उसको घर लाती हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू शेल्टर हर फ्रॉम द डैम्प एयर, उस डैम्प एयर से उसको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। सिर्फ तुम इतना डिस्क्राइब कर पाओगी, इसके अलावा और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और इसके साथ ही जो क्रिस्टाबेल का फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, इट इज़ एंडेड। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो पोएम है वो एंड होती है जब ज़ेरेल्डाइन क्रिस्टाबेल के ऊपर वो जादू कर देती है, स्पेल कर देती है, जिसकी वजह से वो उसका जो स्पीच होता है, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएगा और वो अभी के बारे में किसी को भी नहीं बता पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पार्ट फर्स्ट का जो कंक्लूज़न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, और उसके बाद में हम इसमें जो यूज़ हुई हैं लिटरेरी डिवाइसेस उनके बारे में भी बात करेंगे।